So hey guys, welcome back to my channel. So if you're new here, my name is Kavita and in today's video we are going to learn 5 different hairstyles with athletic wear. So let's get started with the video. Okay, so starting with the first one, इसमें आपको मिडल पार्टीशन करनी है. So आपको हल्के से हेयर लेना है यहाँ से. Roll it and then pin it. And so here you are done with your first hairstyle. Okay, so moving on to next one. इसके लिए आपको साइड पार्टीशन चाहिए. एंड देन जो भी हम करेंगे ये वाला सेक्शन होगा, तो हल्के से बाल छोड़ के आप बाकी के हेयर्स को रोल कर सकते हैं ऐसे. और अगर आप चाहें तो इसमें आप एक पफी लुक भी दे सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. बालों को ऐसे नीचे से पकड़ के इनको हल्का सा रोल करना है. एंड देन रोल करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे को ऐसे बल. यू आर डन. ओके, सो फॉर नेक्स्ट हेयर स्टाइल आपको ये साइड पार्टीशन करनी है. देन आपको ऐसे हल्के से बाल लेने हैं. देन ही सेम आपको इस साइड पे रिपीट करना है. एंड योर हेयर्स आर डन. ओके, सो फॉर द नेक्स्ट हेयर स्टाइल मिडल पार्टीशन करनी है. एंड देन यहाँ से थोड़े से बाल लेके तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है. एंड देन ऐसे प्लेस करना है. देन ऐसे अब हम इसमें हेयर ऐड करेंगे, तो फ्रंट साइड से आप जितने चाहे उतने हेयर ले सकते हैं. एंड here you are done with your hairs. आप चाहते हैं तो आप यही सेम इस साइड भी कर सकते हैं, बट ये भी अच्छा लग रहा है. ओके, सो फॉर द लास्ट वन आपको साइड पार्टीशन करनी है. एंड देन यहाँ पे भी हमें वही वन साइडेड फ्रेंच ब्रेड बनानी है. अभी हम इसमें नीचे से फिश टेल करेंगे. ओके, सो ऐसा करने के बाद आपको इन बालों को पीछे ले आके ऐसे यहाँ सिक्योर कर लेना है. जस्ट अ सेकेंड. एंड देन
सारे बाल फ्रंट साइड पे लेना है, एक बार इन्हें अच्छे से कोम कर लेना है। तो जब हम बनाएंगे इनके फिस्टल, तो फिस्टल बनाने के लिए आपको अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ऐसे, एंड देन यहाँ से एक पार्ट लेके पीछे की साइड से यहाँ पास करना है ऐसे फोल्डेड, देन यहाँ से एक पार्ट लेके, आप जितना पतला बनाएंगे फिस्टल उतनी सुंदर लगती है, देन पीछे से इस साइड, और यही चीज़ आपको रिपीट करनी है। जस्ट आपको अपनी ये प्लेट को ऐसे दोनों को ऐसे पुश करना है, पुल करना है, जो भी है। You are just done with your last hairstyle. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, share it with your friends. Bye bye. I will see you in the next one.